Hello, this is Kamini from Speak Like Kamini and welcome to today's video on Vocabulary Challenge Day 23. आज मैं आपको लेटर X के 4 ऐसे वर्ड्स दूंगी जो आपके सिंपलर साउंडिंग सिनोनिम्स के बेटर साउंडिंग सिनोनिम्स होंगे। इनसे ना ही आपकी वोकैबुलरी पॉलिश होगी बल्कि अच्छे से आप कहीं भी कम्युनिकेट करेंगे तो आपकी कम्युनिकेशन स्टैंड आउट करेगी। अगर आपने हमारे इसी सीरीज़ के दूसरे वीडियोस चेक नहीं किए हैं तो आप उन्हें हमारी प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट कर सकते हैं। Alright, the first word on the list today is genial. Genial का मतलब होता है welcoming. Let's take an example. India is a genial destination for international travelers. मतलब जो भी internationally travel करते हैं उनके लिए इंडिया एक बहुत ही hospitable destination है. The next word on the list is zenacious. Zenacious means filled with yearning for change. Let's take an example. She is not a quitter, just a zenacious person. मतलब वो चीज़ों को बीच में छोड़ती नहीं है लेकिन उनको एक yearning होती है change की. The next word on the list is Xerox, which means a photocopy. किसी भी चीज़ की photocopy बनाना उसे हम Xerox भी बोलते हैं. Let's take an example. She decided to Xerox the original documents. मतलब उन्होंने original documents की एक photocopy बना के रख ली. The last word on the list is X factor, which means a noteworthy special talent or quality. किसी की कोई भी खासियत या कोई special quality हो तो हम उसे बोलते हैं वो इस इंसान का X factor है. Let's take an example. The musical band has an X factor. मतलब जो musical band है उसके पास एक special quality या special खासियत है जो उसे अलग बनाती है. Alright, with that we have come to an end of this video. I hope you enjoyed learning and listening to these words and will try practicing them in your communication next time. If you have any doubts pertaining to this video, you can always write in the comment box. If you want to learn more things about English, you can always follow us on Facebook, Twitter and Instagram, the links to which have been given in the description box. Alright then, till next time, it's bye-bye from Speak Like Kamini.